So, I formally welcome all of you once again to the online show by PsychArt. Well, let me give you a brief introduction about what PsychArt is and what are their goals and objectives. Well, PsychArt is a brain health platform that helps people connect with best specialized, individualized brain health centers and experts who practice evidence based treatment. PsychArt in India tackles three big mental health issues in Delhi NCR. Firstly, lack of access. They open clinics across the region, making professional help closer for everyone. Secondly, affordability. They offer various payment options and packages to fit different budgets. And lastly, stigma. They normalize seeking help by raising awareness and creating safe spaces for treatment through online and offline brain health influencers. For the today's discussion, we have with us Dr. Nimesh G. Desai. He's, he's a senior consultant psychiatrist, former director, Institute of Human Behavior and Allied Sciences, President, Manovikas Charitable Society. He formerly worked at National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore for 6 years from 1982 to 1988. He also worked at AIMS Delhi for 10 years from 1988 to 1998. He has led significant landmarks for institute, just to name a few: accreditation of Hibas Hospital by National Accreditation Board of Hospitals, is a member of NHRC core group on health and mental health, and a member of Government of India's National Steering Group on Mental Health. The second panelist that we have with us is Dr. Romesh Kumar. Dr. Romesh Kumar, he hails from J&K and is an expert mental health and counseling psychologist. He brings to the table a wealth of knowledge and a decade of applied experience in counseling and mental health. With a passion for nurturing the resilience of students, he has dedicated 10 years to the practical application of his expertise, making a profound impact on the lives of students in JND. Notably, he has served as a head of counseling cell at Directorate of School Education Jammu for 7 years, demonstrating leadership and commitment to fostering a supportive environment for educational institutions. With a rich academic background, he has also served as an esteemed research fellow at Defense Institute of Psychological Research under the aegis of DRDO, Ministry of Defense, Government of India. Driven by a deep understanding of unique challenges faced by school children, he stands as a beacon of compassion and guidance in the realm of mental health and education. Welcome both the experts, and we will start with questions. So, Dr. Umesh, I would like to ask you that find contentment and happiness in your own words, because this topic is really relevant and we need to understand the difference that it holds. Dr. Umesh. Thank you so much, Dr. Sheetal, and Dr. Mr. Ramesh Kaul and Deepak Kaul and the Psychart team. Okay, quickly to get to the point. I guess very briefly, happiness is an emotional state. Among the range of emotions that human beings experience, or I guess even other animals do, but human beings that we know sure about, among the range of emotions that human beings experience, happiness is one of them, and primarily an emotional state. Contentment would be, I guess, more of a cognitive, philosophical state, along with emotional tinge about how you are, about what life you have led till now. And so, I particularly do draw a very important difference between happiness and contentment. Also, because if I might briefly titillate the issue, um, I do believe that it's the Western culture, the Christian, and the Western culture that focuses more on happiness as one of the goals of life. Uh, I do believe, with my limited understanding, that the Eastern philosophy and the view of life, worldview,
is alongside happiness also about satisfaction or contentment in life at whatever stage of life one is, at the age of 25, 45, 65 or more. And so uh, we are perhaps getting a little too influenced by the Western concept of happiness, I do believe. While it is very important to study happiness index and rate nations on happiness and help people reach happiness, as I'm sure we'll discuss in the course of this 60 or 90 minutes, um, as also at least an equally important parallel goal, I believe, for individuals and societies of contentment and relevance. Thank you. Dr. Ramesh, would you like to throw some light on how do you see contentment and happiness through your own experience in your own words? Uh, there was a request for somebody to Yes, sir. Yes, sir. translate something in Hindi also. तो सर ने Oh, बहुत okay. ही Sure. yeah no if I'll do a bit of it. तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि वेस्टर्न का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज मोर अ इमोशन फोकस, एक ट्रांजिटरी इमोशनल स्टेट है हैप्पीनेस, और कंटेंटमेंट जो है वो एक एटीट्यूड है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक जजमेंट है जिसमें कॉग्निटिव कि जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं कि जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जो मेरे पास है वो कैसा है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ओवरलैपिंग है, बट कंटेंटमेंट इज मोर ओवर आर्किंग, इज ए फाउंडेशन। उस फाउंडेशन में हैप्पीनेस के क्लाउड्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो ट्रांजिटरी है। And very importantly, I want to add, Dr. Desai, that many times, many people actually they may be seeking contentment, but because of the buzzword happiness is so popular, it is so popular in media that they are searching how to be happy, how to be happy. They may be looking for inner peace, they may be looking for inner calm, they may be seeking something else. But Right. because of Western influences, you are perfectly right. Because of the Western books or Western literature available, we have limited ourselves to emotional experiences, especially experiencing some positive emotions. This is what I feel about. If you allow, Dr. Sheetal, Ramesh, I completely agree with you. That's such a Yeah. wonderful point. That's a wonderful point because people might individually or as a society or as cultural groups, we might actually be seeking and looking for and working towards satisfaction or contentment. और जैसे आपने Right. कहा हिंदी में बात करें संतोष या Right. तृप्ति हो, संतोष हो जीवन में, Right. लेकिन Right. लेकिन उसको हम जो एक पाश्चात्य प्रीडोमिनेंस वाली ग्लोबल कल्चर है उसमें हैप्पीनेस कह देते हैं। अब टू टेक दैट अ स्टेप फर्दर, अब आई आल्सो डू बिलीव दैट as you very well know and Dr. Sheetal and our other colleagues will know, happiness also has a component of pleasure seeking, Yes. Yes. hedonism. Yes, sir. Not to be unfair to hedonistic drives. We are all as humans prone to hedonistic drives. But जैसे आपने कहा, एक एक्साइटमेंट ढूंढना, खुशी ढूंढना, खुशहाली के पीछे भागना एक चीज है। मुझे अभी याद आ रहा है, शुरू में ही बात कर लें और आगे करेंगे। गीतकार जो शैलेंद्र थे, आप सबको याद होगा, उन्होंने Yes, sir. एक अमर गीत लिखा राज कपूर और मुकेश जी और शंकर जयकिशन के लिए, किसी की मुस्कुराहटों पे Wow, वो wow, निशान। very nice. तो Yes. अगर आप एक्चुअली स्पेक्ट्रम देखें हम लोग सब मिलके, तो खुशहाली खुद होना, खुद खुश होना, एक दूसरों को खुशी दे पाना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट पैदा कर पाना और संतुष्ट होना, ये मुझे लगता है जैसे आपने हिंट किया एक स्पेक्ट्रम पे बात बन जाएगी, Right. Right. है ना? और सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या ये जो कंटेंटमेंट है और हैप्पीनेस है ये एक्सक्लूसिव है, और साथ ही में कि क्या एक इंसान ये दोनों चीजें एक साथ एक्सपीरियंस कर सकता है या फिर ये दोनों अलग अलग समय में एक्सपीरियंस की जाती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे जैसे डॉक्टर रमेश मेरे साथी कह रहे थे, सी सेटिस्फैक्शन एक लॉन्ग टर्म एटीट्यूडनल कॉग्निटिव मिक्स मेंटल सेट है। हैप्पीनेस इज मोर ऑफन a temporary transient state. Of course, it can be long term. एक और मुद्दा छेड़ दूं,
डॉक्टर रमेश बताएं, बाकी हमारे साथी भी अगर आप परमिट करें एटलीस्ट सवाल पूछ पाए, अपने विचार बता पाए। मैं दोपहर से ये सोच रहा हूँ हमारे इस टॉपिक के बारे में। एक एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि अगर आप लोग सब गौर करें, ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन एट्रीब्यूट, जो कोई भी मानवीय मानव खासियतें हैं, भावनाओं की, विचारों की या एटीट्यूड की, उसमें संभावना रहती है कि इट कैन बी कैरी टू फार। ओके, Yes. है ना? तो खुशहाली या हैप्पीनेस में वो संभावना ज्यादा है, मेरी सोच पहुंचती है। So that is what Dr. Ramesh and some of us mental health professionals would call as hypomania or mania. अगर आप लोग सब याद करें, बाइपोलर Yes. डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, जिसमें व्यक्ति डिप्रेशन और मेनिया के बीच ऑल्टरनेट होता रहता है, तो खुशहाली में एक डेंजर ये है डॉक्टर शीतल, that it has the inherent potential, like almost all other human attributes, of being carried too far. Am I believing that satisfaction or contentment does not have danger? That danger? No, I don't think so. That also has its danger. मैं दिन में खास सोता रहा हूँ, but less so, less sharp, less severe. अगर संतोष या कंटेंटमेंट की इंतहा हो जाए तो क्या होगा? The person will become lazy or inert or inactive. Okay. भाई मैं इतना संतुष्ट हूँ जीवन में कि मुझे और कुछ नहीं करना, तो वो भी पैथोलॉजिकल समझा जाएगा, है ना? लेकिन खुशहाली में बहुत इजी डेंजर है टू गेट इनटू हाइपोमेनिया एंड मेनिया। ओके ओके सर, आप रमेश सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कुछ और कंटेंट से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस के ऊपर कुछ लाइट थ्रो करना चाहेंगे? Yeah, before I talk about misconceptions, uh, like simultaneously, let us take a concrete example. Like contentment is a more sustainable base on which we experience transitory emotions known as happiness. और हैप्पीनेस का एक और इनका जो ओरिजिन का ये है कि इट्स एक्सटर्नली ड्रिवन और इंटरनली ड्रिवन, राइट? So most of the time, like happiness, we seek happiness. Like many times, I see many younger colleagues ki let us enjoy with a can of beer in our hands. Let's enjoy. So let us enjoy. So they are seeking some external stimulants to get that kick or a rush of a momentary happiness state, and after that it's nowhere. Then you need another can of beer or some other company or some other external stimulant to be happy. Now, contentment, I believe that it stays, and it is long lasting. And in contentment, I think you can face both the things, even in challenges, even in some negative emotions. I'll call not that positive emotions. You so Nimesh sir, I beg to differ with the earlier thing that you said. This is very fine chemically driven, or like you said, like संतोष अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम वो apathetic हो जाएगा. So let us, from psychological point of view, so let us operationalize contentment, though it is philosophical, of course. हम उसको अगर वो apathy है, अगर वो complacence है, अगर वो laying laid back approach है, तो हम उसको contentment ही नहीं बोलेंगे. हम contentment के अंदर वही I agree with you. हम कंटेंटमेंट में वही लाएंगे जिसमें like it is kind of a deep inner calm, a deep appreciation, yeah, right. Sort of. So how do we know, like, if it is contentment or if it is just a fleeting pleasure? दो मुद्दे हुए ना शीतल। एक तो जो डॉक्टर रमेश हमने दोनों ने बात कही कि भाई while happiness is more in the emotional domain, one faculty of mind, contentment will be in 2 or 3 comprehensive experience, you know. And the second जो हमने hierarchy अभी बनाई कि भाई fleeting temporary chemically derived pleasure है, non chemically derived temporary pleasure है, थोड़ा long term pleasure है, you know, खुश है, खुशहाली है जीवन में. Okay, let me say this. Let me go out on a limb and indulge in some amount of self-disclosure. If you were to ask me, am I happy and am I content? My answer will be block capital में yes
for contentment. Right. Am I happy with life? I will say yes and no, right? Yes, sir. है ना, happiness is very transient, जैसे डॉक्टर रमेश ने कहा, changing from time to time, dynamic issue. You know, Yes, sir. persistent happiness को mania कह देंगे ना फिर. कि हम we are seeking something positive emotions. We are not seeking negative emotions. So hedonistic जो treadmill है वो happiness में चल रहा है. Contentment में वो नहीं है. Happiness is more externally driven. Contentment is more internally, I would say. This is sourced Yeah. from inside. And as sir rightly said that it is transitory, it is relatively permanent, or it is different. They are two different aspects. But yes, of course, if we have a foundation of contentment, तो happiness का थोड़ा ज़्यादा chance रहेगा, या it can come and go. Very true. Very true. So now that we know like what is the difference, I would like to ask both of you, how do we cultivate that sense of contentment? Because we have been talking like happiness and contentment, but now the problem is, if people now they know the difference, how to cultivate that thing? Okay, allow me. I might even again go out on a limb just for the sake of discussion and provocative thought stimulation, that one might even say, without being unfair to आम जनता, कि ज्यादातर मनुष्यों के लिए हैप्पीनेस शायद एक माध्यम हो सकता है या एक पड़ाव हो सकता है कंटेंटमेंट तक पहुंचने के लिए, और वो बिल्कुल मुनासिब है. चंडीगढ़ जाना है तो मोस्टली दिल्ली के थ्रू जाएंगे, रेस्ट ऑफ इंडिया से, राइट. जम्मू जाना है तो दिल्ली या चंडीगढ़ से जाएंगे, या दिल्ली से जम्मू जाएंगे. तो वो एक पड़ाव हो सकता है. Although some people might be in a position to reach contentment alongside only some happiness, but for most people, so I think as Dr. Ramesh and I are both saying, happiness, खुशहाली ढूंढना अपने आप में गलत कतई नहीं है. खुशहाली ढूंढी जाए, लेकिन खुशहाली ढूंढें, खुशहाली को अनुभव करें, महसूस करें, खुशहाली को फैलाएं, दूसरों के साथ शेयर करें, लेकिन उसके साथ साथ अवेयरनेस रखें कि लंबे अरसे में कंटेंटमेंट की तरफ अग्रसर होना अच्छा होगा. Let us first So think it like need not be contentment either or. consists of what? As sir very rightly said that the journey goes through happiness, and he also said that there are exceptions कि हम directly be like contentment. So contentment is basically sufficiency. Contentment is appreciation of what I have. Contentment is active acknowledgement of that I have these resources, these are sufficient, I'm grateful for. So if I want to cultivate, contentment, intentionality, and practice, with these we can. So it involves gratefulness, what we call gratitude exercises or gratefulness. This is very common nowadays. So if we practice gratefulness, this is one thing through which we can do. Then mindfulness is panacea for everything. Like if you're mindfully thinking, reflecting, eating, and then also realizing that what are our wellness contingencies, that when I depend upon कि मुझे इसके लिए ये खुशी चाहिए, या ये होगा तो ये खुशी होगी, when I identify conditions, and then other things, other things like happiness के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे hobbies चाहिए, मुझे nature के साथ रहना चाहिए, मुझे meaning चाहिए life में, मुझे purpose चाहिए, मुझे social relationship चाहिए, मुझे cooperation चाहिए, मुझे human connection चाहिए. तो वो सारी चीजें आई थिंक जो हैप्पीनेस हमें देती हैं, दे कैन ऑल्सो इन अ लॉन्गर रन, दे कैन ऑल्सो कल्टिवेट अ सेंस ऑफ contentment in us, starting from gratefulness, mindfulness, to hobbies, to goals, to meanings in life, to social connections. So as far as if we mindfully practice, or if we intentionally do practices, we may be in a position that we feel contented over a period of time. Yeah. And Ramesh sir, do you feel that achieving goals, they also contribute to happiness or contentment? Like, setting small goals for yourself and achieving those goals.
So it might bring happiness at the first stage, but if we do it along with being grateful for what we have achieved, will bring contentment over the period of time. So, setting small goals and deriving satisfaction from those goals, this is fine. But जैसा हमने शुरू से यही सुना है कि enjoy the journey, enjoy the process. Don't wait कि somebody sits for IAS, then he qualifies IAS, then he feels that no, I've qualified for IAS, I'm contented. No. So we have to learn that there is no milestone where we will reach and we will feel contented. Setting of goals and setting up of more meaningful goals, I would say, setting up of more holistic goals. So definitely it gives sort of contentment. But if we are very well aware that goal achievement will give us contentment, this is a elusive. This is false, I think. So not goal achievement, but if we are engaged with the goal and we are enjoying the process of the goal setting and meaning in the goal, then goal achievement. So I think it can sustainably contribute to हमारे खुद what you के call contentment. डायलॉग पे लागू करें तो हम दोनों अभी थोड़े बहाव में चल रहे हैं पॉजिटिविटी के. Right. Okay. Right. To come back a little to the ground, if I may, Ramesh. See, बहुत सारे जनता के लिए भारतवर्ष में और दुनिया भर में हैप्पीनेस या कंटेंट में तो स्टेप 3-4 हो जाएगा, है ना. सबसे पहले उनको नेगेटिविटी और नेगेटिव इमोशंस अवॉइड करने हैं, परे रखना है ना. सो लाइक आई एम सेइंग, हम लोग थोड़ा पॉजिटिव बहाव में आ गए, बट टू कम बैक टू अ लिटिल मोर बैलेंस, इफ यू एग्री, कि सबसे पहले अगर निराशा या उदासी या विफलता की भावना होती है तो उसको फाइट करें, उसको रिमूव करें, उसको कम करें. That will be the step 1. Yes. At least get to a new second step, get to a neutral state of emotion and feeling to be able to get to the positive. Right. एक और दूसरा उसी कड़ी में, and again to extend further what Dr. Ramesh said so well, मैं बड़े समय से बच्चों के साथ जब एग्जाम के संदर्भ में बात होती है, प्रधानमंत्री जी करते हैं परीक्षा पे चर्चा, तो मैं अक्सर ये कोट करता हूँ, साइट करता हूँ कि unfortunately we seem to have a dichotomous binary concept of success and failure. Failure, yes. सफल या विफल. मैं उसमें बीच में जोड़ना चाहता हूँ नॉन सक्सेस. Right. मिड पॉइंट है नॉन सक्सेस या असफलता. विफल नहीं हुआ मैं, लेकिन सफल नहीं हुआ. और बहुत सारे व्यक्तियों के साथ जीवन में अक्सर एकेडमिक करियर में, सोशल गोल्स में, प्रोफेशनल गोल्स में, सामाजिक, यही होता है कि बहुत सफल भी नहीं हुए, नो स्टेलर सक्सेस, पर फेल भी नहीं हुए. Right. ठीक ठाक चल गया जीवन, या जो हमने सेट किया था वो काफी हद तक हमने अचीव कर लिया. तो असफलता को विफलता से कंफ्यूज ना करें. जी सर. Right. You know? Yes, sir. That's important. I think for all the people who are students or who are in touch with students, I think most of us we are, and even as a teacher, as I am also teaching, I am also facing the same kind of problem when I talk to my students. Right. Before I take the next question, I just want to make an announcement. Anyone in the audience who wants to contribute and promote mental health can join the WhatsApp group, and the details are given in the messages that are being flued here. So my next question, sir, I would want, because we are facing a lot of relationship issues, and do you think that relationships also play an important role when it comes to contentment and happiness? Why don't we let Dr. Ramesh go first, please? Yes, sir. No, yes, please. Ramesh, go ahead. Okay. So, sir, like before I answer this question, let me go a bit back where sir said like avoiding negative emotions because we have flown. Actually, contentment is both are a kind of idealistic topics. So actually, we are. Yeah. So avoiding negative emotions, of course, this is one thing. So now I was wondering, like seeking positive, avoiding negative. This is one, one line of action.
Yes. Then second thing is, developing that resilience, developing that stoic philosophy, developing those inner calm that anything which comes. So I'm in a position that it doesn't sound me negative. I feel those negatives are transitory. So अब मैं रामायण देखता हूँ सर, जो राम, even when he shoots the arrows, so there is a sense of calm, sense of peace, sort of. So second version, as far as contentment, though it is an idealistic and hyper positive topic, as you yourself Yeah, admitted yeah, just now, but instead of, because seeking happiness will be like chasing a rainbow, and avoiding negative again will be very impractical. We are getting negative, like starting from the home traffic hassles to anything. yeah, And second thing is like, if we, in a sense, can develop, you will be able to throw more light. So let us be resilient, or let us be develop some a world perspective or self perspective or such awareness that seemingly so negative things does not seem so negative, and we get such a larger perspective that they seem smaller. As you yourself said, that perspective when a failed student seems Hmm. so. This is what I wanted to add. And coming to the next question, that is relationship, I feel like this is common saying we have heard is like, joy shared is joy doubled. So of course, when you have good relations, you talk to them, you're happy being with, because we are social, we are gregarious creatures. तो हमें अच्छा ही लगता है जब हम उनके साथ बैठते हैं. uh, I personally believe that meaningful social relationship can contribute a lot to happiness, but as far as contentment is concerned, again we have to think of that even social relationship is something which are externally driven. Like if the relationship is not there, then we will be not contented. So we have to, even in relationship, we have to build ourselves from, we have to develop ourselves as a whole, so that we are not externally dependent on those relations for feeling of that inner calm or peace. This is what I want to say. Yeah. yes. Dr. Sheetal, to continue from there, what Dr. Rajesh has said, let me go backward for a minute. Let's first address this issue of very important issue of relationship जो आपने उठाया. जैसे डॉक्टर रमेश ने कहा, देखिए, जैसे जैसे अंग्रेजी में हम लोग स्कूल से निबल लिखते रहे ना, मैन इज अ सोशल एनिमल, एज रमेश said. Yes, sir. So Yes, sure, sir. relationships are important, रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, नाते बहुत मायने रखते हैं, लेकिन जिस संदर्भ में आप पूछ रही हैं, young people looking for erotic or non-erotic but romantic relationships. There can be Yes, erotic yes. romantic relationships, there can be non-erotic romantic relationships, even in young age. Yes. Right. मुझे इमीडिएटली ये सोचता है कि एक एक हम लोग यहाँ सलाह देने और मशवरा देने, ज्ञान बांटने नहीं बैठे हैं. हम सिर्फ यंग बच्चों के ध्यान में चीजें लाना चाहेंगे, फिर वो डिसाइड करें अपने लिए. दैट्स फॉर श्योर. Right. हैविंग सेड दैट, एक विचार मैं रखना चाहूंगा सबके सामने, ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ अस. किसी भी रिश्ते को, किसी भी व्यक्ति को, खासकर रोमांटिक रिलेशनशिप्स को, अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन हिस्ट्री सीम्स टू हैव मेड इनटू अ विक्ट्री और लॉस. और Yeah. अगर हम उस पैराडाइम से निकल पाए, Right. by Right. Mr. X and Miss Y, or by now even Mr. X and Mr. Y in a homosexual relationship, if they can share, like Ramesh said, that's wonderful. But if Y does not go with X, X should not have to feel that as कि मैं हार गया. Yeah. ये हार और जीत की बात अगर हम अपने मन से, अपने दिल दिमाग से थोड़ा कम कर पाए, तो रिलेशनशिप का जो ट्रॉमा है वो मुझे सोचता है कम हो. जी. ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स का ट्रॉमा होगा. वो रिश्ता ही क्या है, वो प्यार मोहब्बत ही क्या है जिसमें दर्द ना हो, है ना. बिना दर्द किया तो प्यार मोहब्बत हो नहीं सकता. Right. तो दर्द होगा, लेकिन मुझे लगता है दर्द कम होगा अगर हम वो हार जीत के पैराडाइम से अपने आप को थोड़ा निकाल पाए. दैट, लाइक रमेश said, every relationship is a shared experience.
Second Right, sir. point, and this I must say I have experienced a lot and thought about it. थोड़ा थोड़ा वक्त इस पृथ्वी पे ज्यादा गुजरा है आप दोनों के बनिस्बत और बाकी साथियों के। तो Yes, तो sir. तो एक अनुभव मैंने अक्सर पाया है अपने लिए यूजफुल, जो शेयर करना चाहूंगा, कि जो रिश्ता माँ बाप के साथ और किसी फैमिली में दोस्ती या रोमांटिक रिलेशनशिप जितना समय मिल पाया उसको पर्याप्त माने, जी, Right. है ना। भाई किसी के साथ 2 साल रिश्ता रहा, 5 साल रहा, किसी के माता या पिता जल्दी गुजर गए, सिबलिंग नहीं रहे, लेकिन जितना मिला उसको एडिक्वेट माने, उसे संतोष डिराइव करे, तो शायद बड़ा हेल्पफुल होगा। तो एक तो हमने ये हार जीत का पैराडाइम गलत अपना लिया है। दूसरा, रियली विथ फुलेस्ट रिस्पेक्ट एंड जेन्युइन डीप रिस्पेक्ट फॉर poetry and शायर and कवि and all of that group, right love oriented people, मुझे ये भी दिख रहा है अभी इस मिनट पे कि ये परमानेंट लव की जो बात हो गई है ना, ये बड़ा गड़बड़ करती है Yeah. कि कोई भी yes, रिश्ता या प्यार मोहब्बत परमानेंट होना चाहिए, Mm-hmm. तभी वो सफल माना जाए, है ना। Mm-hmm. तो दो पैराडाइम शायद हमें मानव जाति को थोड़ा रिव्यू करके बदलना मददगार होगा, मुझे लग रहा है। आई वांट टू गो बैक फॉर अ मिनट, and if you both permit, from a slightly more, Dr. Ramesh and I both come from clinical mental health perspective. If I might take that next level to medical psychiatric perspective, हम ये भी अपने आप को याद दिलाएं कि जैसे हम लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव इमोशंस अवॉइड करें, हो सके तो न्यूट्रल स्थिति पे आ जाए, और फिर पार्किंग से न्यूट्रल गियर में फिर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जाएं। लेकिन चूंकि डिप्रेशन एज ए डिजीज, डिप्रेशन एज ए बायोलॉजिकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इतनी तादाद में है, अबाउट 1/5 ऑफ Yeah. ह्यूमन रेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। हम ये भी थोड़ा ख्याल करें और हमारे साथियों के ध्यान पे लाएं कि खुद के लिए या अपने दोस्तों में, परिवार में, या काम के साथियों में अगर डिप्रेशन का इंडिकेशन हो तो हम उनके एक्सपीरियंस को अलग लेवल पे समझने की कोशिश करें। ना तो उस डिप्रेस व्यक्ति को समझ आता है कि वो डिप्रेस क्यों फील कर रहा है, Right. ऑफन विदाउट रीजन, और न अगल बगल के लोग समझ पाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से बता दूं, मेरे पास एक स्लाइड पे ना बहुत अच्छा कार्टून है, कहीं यूरोपियन सेटिंग से। two लेडीज आर सिटिंग ऑन अ पार्क बेंच, और एक महिला दूसरी महिला से कहती है कि भाई तुम्हें उदासी क्यों हो रही है, व्हाई आर यू डिप्रेस्ड, वर्ल्ड इज डूइंग वेल, लाइफ इज सो गुड, सब कुछ है, यू नो आपके हमारे पास सब कुछ है, तो डिप्रेशन काहे का हो रहा है, जो अक्सर रिस्पॉन्स मिलता है। दूसरी महिला पलट के पता है क्या कहती है, भाई तुमको अस्थमा के कारण सांस में क्यों तकलीफ होती है, हवा तो इतनी सारी है, Hmm. वातावरण में हवा की कमी नहीं होती है, लेकिन जो अस्थमेटिक पेशेंट है उसे सांस लेने में तकलीफ होती है डिस्पाइट देयर बीइंग अ लॉट ऑफ एयर। सो डिस्पाइट देयर बीइंग अ लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस, खुशी है, सब कुछ है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो डिप्रेस व्यक्ति है वो लाचार है, बेबस है अपनी डिप्रेशन की और उदासी की भावना के बारे में। वो संवेदनशीलता मैं जरा केंद्र पे ले आऊं हमारे बाकी चर्चा के साथ, है ना। जी सर, Right. Uh, yes, sir. What is it? पोएट्री की आपने बात की तो वो याद आ रहा था कि some poets have also written like कि चांद मिलता नहीं सबको संसार और में, या है दिया भी बहुत रोशनी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी बहुत के अच्छा, लिए। बहुत अच्छा कहते हैं, सरस्वती चंद्र, Yeah, सरस्वती yeah, चंद्र। yeah, 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 of course. So, Very right. very, very valid point you highlighted, the helplessness. I have seen yoga teachers crippling too. So we have to know, look from the perspective of biochemistry, then involvement of sympathetic, parasympathetic nervous systems, that how they are involved, how body, and of course that will bring more empathy toward the people who are actually suffering. And we won't be just talking the idealistic things and only positive. We will actually uh, underline the helplessness and some biochemical or biological factors which are beyond the control of the individual. So we totally empathize with the patients, and the kind of statistics which you showed, it is also a grim picture that
even I wanted, like, before addressing these idealistic topics, we should also address the topics which Yeah, day-to-day yeah, yeah. commoners are facing, because we are living in a very extremely challenging world, sir. I Yeah. totally agree, sir. Yeah. And sir, like I think you mentioned it in your opening remarks that culture also influences how we perceive, or how we pursue contentment and happiness. In the same light, if you see these days, technology, people are taking help of technology, or they think that technology can bring them contentment or happiness. What is your take on this? मुझे एक बात याद आती है, आप सबके साथ शेयर करूं। 70 के दशक में, सो करीब 50 साल पहले, एक जर्मन साइकियाट्रिस्ट बाय द नेम ऑफ मेडार्ड बॉस came to India on some fellowship, no? One of those Max Planck, और 6 महीने 1 आध साल कुछ उन्होंने इंडिया में गुजारा। उन्होंने जो किताब लिखी, उसमें एक वाक्य जो डिस्क्राइब किया है ना, वो इतना सटीक है जो आप कह रही हैं शीतल, उसके संदर्भ में। और कल्चरली जो विदाउट अवर अवेयरनेस कंटेंटमेंट इज अ पार्ट ऑफ अवर बीइंग। मेडार्ड Yes. बॉस ने क्या लिखा है एक जगह अपनी किताब में कि भाई मैं एक शाम स्लम्स में गया और मैंने देखा कि एक 8 फीट बाय 8 फीट के कमरे में 8 इंसान रह रहे हैं। ग्रैंडफादर है, वो एक बच्चे को संभाल रहा है। फादर है, वो इज ट्राइंग टू डील विद 2 more किड्स। मदर जो खाना पका रही है, लेकिन वो एक बच्चे को अपने पैर पे सहला रही है, दूसरे बच्चे को दूध पिला रही है और रोटी बना रही है। ये तो हो गया। और फिर मेडार्ड बॉस कहता है कि इस सिचुएशन में आई सॉ ऑल ऑफ देम स्माइलिंग एंड सीमिंगली हैप्पी। तो मेडार्ड बॉस को, उस जर्मन साइकियाट्रिस्ट को समझ ही नहीं आया कि इतनी डिप्राइवेशन की स्थिति में ये सब लोग खुशहाल कैसे दिख रहे हैं। राइट। तो विदाउट अगेन हम पाश्चात्य संस्कृति की भी कदर करें। और उसमें मुझे एक और रसप्रद बात याद आती है, जो अभी फिर आऊंगा मैं उसमें, गांधी जी ने कही थी। लेकिन ये पक्की बात है कि हम हर संस्कृति की इज्जत करें। हर कल्चर और सिविलाइजेशन की अपनी स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस हैं। बट हैविंग सेड दैट, अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग इन दी, जैसे आपने आई थिंक शीतल हिंट किया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हैप्पीनेस, हेडोनिज्म, प्लेजर सीकिंग में, and एक्विजिटिवनेस, मटेरियल एक्विजिटिवनेस में, या जो मूलभूत मानव मूल्य है कंटेंटमेंट के, जो डॉक्टर रमेश बार बार हिंट कर रहे हैं, वो कुछ कम होते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। और हमें यहाँ जरूरी है कि भारत और दक्षिण एशिया के देश और समाज 21वीं सदी में विश्व समाज के सामने, वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने ये थोड़ा असर्टिवली कह पाए कि मटेरियल एक्विजिटिवनेस या टेक्नोलॉजिकल सक्सेस और कंट्रोल ओवर अदर्स, इंडिविजुअल या नेशंस में पावर ओवर अदर्स, इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और सक्सेस। That's मुझे जो याद आता है, आप एक और याद करें इसी संदर्भ में। पता नहीं, आप जैसे मैंने कहा, आई वेरी रेयरली पुल रैक, बट गांधी जी से किसी वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने एक मौके पे पूछा, बापू, what do you think about Western civilization? And Gandhiji, being what he was, he kept a pregnant pause, silence for 1 or 2 minutes, as if thinking, and then he said, I think it's a good idea. तो वो जो डेप्थ है ना गांधी जी के उस एक रिटॉर्ट में, कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की भी हम इज्जत करें जरूर, लेकिन कहीं कहीं गहराई अलग प्रकार की है। ये भी कहना ठीक ना हो कि गहराई की कमी है। तो मैं अपने आप को सीमित और संयम से कह रहा हूं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में गहराई अलग प्रकार की है शायद, और ईस्टर्न सिविलाइजेशन में जो गहराई है, द डेप्थ ऑफ सिविलाइजेशन इज वेरी डिफरेंट, एंड सो Yes. समवेयर द वर्ल्ड कम्युनिटी नीड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। That's Right. true. Absolutely, In fact, sir. sorry, this talk would be, and I love having this. Love having such talks informally, semi-formally, or even formally with the Western mental health professionals and society. हम तो यहाँ Right. भारतीय लोग बीच के बात कर रहे हैं ना। अगर यही वार्तालाप हम पाश्चात्य देशों के साथ कर पाए तो मजा आ जाए।
Sir, like I totally, you have taken my, words हाँ, in sense I हाँ, absolutely agree with, like, for example, modern generation is the most comfortable generation in terms of, like, yeah, material wealth or means of transport or the things which we have. And just look at 2 generations back, don't go much back. And I feel they were more contented. Our forefathers, they were more contented. We feel more at peace, more at calm, and they were better. So this is where we actually can lead, or we can give a sort Yes. of, we can pave the way for contentment for others. And talking about, sir, जैसे हमारा योग सूत्रा पतंजलि का जो था, उसमें यम नियम में या one में of हाँ, the या, नियम, one नियम्स is संतोषा. या, अच्छा, Yes. करेक्ट, फिर हमारी जो स्पिरिचुअलिटी की जो एक है कि मोक्ष के द्वार, तो एक मोक्ष का द्वार है संतोष, पेशेंस एक है, हाँ, दूसरा संतोष है. सो इट इज सो डीप रूटेड दैट वी फील दैट दे कैन एक्चुअली take us to liberation, they can take us so we can actually contribute a lot to the, global civilization in terms of contentment. We are actually rich. जहां तक मेरी सीमित समझ पहुंचती है, उपनिषद जी से या सर. शास्त्रों से गांधी जी ने एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, जो खास खास पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन समहाउ मुझे बड़ा गहराई से याद रहता है, Right. अपरिग्रह. Yeah. It is non-acquisition, I अपरिग्रह think. का कॉन्सेप्ट जो है, इट इज Non. नॉट कि मटेरियल एक्विजिशन गलत है. भाई आज Yes. के शहरी जीवन में अगर गाड़ी जरूरी है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो रखिए. लेकिन Right. तीन मेंबर फैमिली में अगर 5 गाड़ियां हैं, तो कुछ गड़बड़ है. Hmm. Good part. Yes. 2 या 3 मेंबर फैमिली में एक गाड़ी हो, 2 गाड़ी हो, जिससे यातायात हो सके एफिशिएंटली. Right. एवरी सच एग्जांपल. सो अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट, और उसका मुझे ट्रांसलेशन मिला नहीं है बड़े दशकों से. Uh, क्लोजेस्ट विल बी ट्राई non-hoarding, non-material non-hoarding. Yeah. acquisitiveness of material things. Yeah. Hmm, yeah. So, But अपरिग्रह का मैं बहुत. Sure, go on, please. Exactly. Like many times, I feel very, very happy the things, the Western concepts which we study, and then finally, one fine day, you go through your spiritual literature and you find the gist of that in one word or one shloka, and you said they have Oh, already done and dusted it, and we yeah, are now touching the superficialities. yeah, yeah. Another point I want to bring it to the table. For example, many times I've heard of Bhutan is the happiest country, तो happiness index में Bhutan का ज़्यादा आया. So culture, definitely the pursuit is not material acquisition. So this is very vivid and very clear that material or external things cannot give you the sustainable inner calm which usually we perceive, and we mistakenly assume, and in the end we don't. So culture, of course, has a lot of role to play in terms of guiding their people that what can they find their inner contentment in. I'm ending this with one, Guru. Doha is like, कस्तूरी कुंडल बसे मुर्ग मुर्ग ढूंढे ढूंढे बदमाही, बनवाई. ऐसे गटी गटी राम है, दुनिया राम है, देखत नाही. दुनिया नहीं. तो we are Oh, finding, Kabir, Kabir was like so well such said, so well insightful said. contentments. Yeah. So Ram Ghati mein contentment is within us, and we are looking this in materials or temporary transitory things. Yes, sir. हम्म. That's कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बदमाही, ऐसे गटी Yeah, गटी yeah, राम yeah. है, दुनिया देखत नाही. क्या बात. दुनिया देखत नहीं. Yeah. मैं चाहूंगा अभी जो डॉक्टर रमेश कह रहे थे उससे, वो ये है कि योर वर्ल्ड व्यू और योर एटीट्यूड टू लाइफ एक एक पर्सपेक्टिव में, एक स्पेक्ट्रम पे है, जिनके कम से कम 3 लोसाई है. Right. स्वार्थ, निस्वार्थ और परमार्थ. Yeah. भाई अगर आपकी आपकी वृत्ति और आपके हमारे काम ऐसे हों जो परमार्थ के लिए है, तो बहुत अच्छी बात है. उससे एक स्टेप नीचे आएगा निस्वार्थ भाव से. एटलीस्ट है, किसका भला ना हो ना हो, लेकिन मैं अपना सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं ढूंढ रहा हूँ. और Right. कुछ हद तक परमिटेड है सेल्फ ओरिएंटेड एक्टिविटीज. yes. लेकिन हाँ, मूवमेंट होनी चाहिए फ्रॉम स्वार्थ टू निस्वार्थ टू परमार्थ प्रवृत्ति. जो प्रवृत्ति की बात होती है ना, और आप जो कह रही हैं, आई गेस देयर इज आल्सो दिस ह्यूज मेजर इशू. सॉरी गॉड.
Yes, sir. Continue, please. ओके अब मुझे मुझे ये सूझ रहा था कि विवेकानंद जी, like Kabir Vivekanand, Swami Vivekanand is the other person I hugely respect. उन्होंने एक बात और कही थी जो रमेश पहले हिंट कर रहे थे कि इंसान को जीवन में दो चीज चाहिए, होप, आशा या उम्मीद, एंड पर्पस ऑफ लाइफ, सेंस ऑफ पर्पस. सेंस ऑफ पर्पस कोई भी हो, परिवार को सपोर्ट करना है, बच्चों को अच्छे से लिखना पढ़ाना है, जनता की सेवा करनी है, व्हाटएवर. तो Yes. ये दो चीज अगर कर पाए तो बड़ा अच्छा होगा. Right. कंटेंटमेंट की तरफ शायद, और हमें खुशी और संतोष आसानी से मिल सकता है. सर, अभी जो आपने चीज मेंशन करी, स्वार्थ, निस्वार्थ एंड परमार्थ, उसी से रिलेटेड मैं आपसे एक ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू किसी और की जिंदगी में खुशी या फिर संतुष्टि जो है उसका भाव कैसे ला सकते हैं? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो. And no, I'm saying that with a very definite purpose. Second part, चाहे आपकी या मेरी परसेप्शन में या रमेश जी को या हमारे किसी साथी को ऐसा लगे सही या गलत कि जीवन ने या दुनिया ने या फला व्यक्ति ने, किसी ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की, राइट, छोटे समय के लिए या लंबे समय के लिए ऐसा लगे that I've had a very raw deal in life. But बात तो तब है जब आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ हो, आपके साथ चाहे गलत भी हुआ हो, लेकिन फिर भी आप जीवन को सही दे सके, रिटर्न. See, अगर if life has been good to you and Yes. you are good to life and others, there's no big deal in my view, right? It's Yes. nice. It's nice if world and life have been good to you, you are good in return. Very nice. But Yes. that's not exceptional. Exceptional तो तब है कि चाहे आपको जीवन में दुख मिला हो, पीड़ा मिली हो, आपके साथ नाइंसाफी हुई हो, लेकिन आप दुनिया को और दूसरे व्यक्तियों को पॉजिटिव चीज दे सके. That's important, sir, I think. Uh, Dr. Ramesh, would you like to say something on how we can help others experience more contentment and happiness? Sir, though it is not very directly related, but तरुवर फल नहीं खाता है, सरोवर पियत न नीर, परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर. So a little bit of saint is in each of us. I think the biggest thing which we can provide this is compassionate presence, the kind of cooperation in the workplaces or in our at homes or societal places, but which I find very seriously missing. Even the NEP government has seriously introduced cooperation as a life skill. So we provide supportive environment. We just are kind to them. We are generous to them. So by being generous and kind, we also increase our well-being, because kindness and well-being or happiness is linked. If we are kind, it is beneficial to us. So if we are kind, we are making him happy or him contented or ourselves happy. Then we are cooperative, we are supportive, we are helping, we are appreciating, and we are helping him find his strengths. We are helping him find the strengths. Then we are empathetic towards the person, but we technical terms में अगर कहेंगे थोड़ा सा उसका empathy उसके साथ रखें, cooperation रखें, social like support रखें, तो मुझे लगता है these factors have a lot of contributions. Why we are not happy? Because of lack of social support. Why we are not happy? Because of the competition. Why we are happy? Because we are fighting for the resources. So if competition is replaced by cooperation, I think we can contribute the well-being, contentment, or what we call the happiness of our fellow beings. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, right. राही को छाया नहीं, फल ला गया तुझे. Very well said, Dr. Ramesh and Dr. Desai. Because I think in today's world, we have lost the essence of being empathetic. And that is something that we need to teach to students or people we come across. I think
as a person, we first need to be empathetic, and only then I feel we can teach the same to people around us, and to make their life more happy, and maybe in a longer run we can also share the contentment as a person, that we feel they can experience the same thing. Just यहाँ मुझे एक थोड़ी सी कंसर्न है शीतल। yes sir. हमने हमने अब तक बात नहीं की सोशल मीडिया की, और मैं आई एम रीजनेबली अलर्ट एंड एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, नॉट वेरी हाई बट रीजनेबली। मुझे कंसर्न ये है कि जो आपने बात कही वो सोच के लेवल पे तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जी अगर सर. आप अपने आप अपनी इज्जत करें, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, तो आप एम्पथाइज भी करेंगे और दूसरों को एम्पैथी कन्वे कर सकते हैं। Yes sir. एक जो सोशल मीडिया पे अभी ज्यादा चल पड़ा है, सेल्फ लव। Yes sir. मुझे कंसर्न बड़ी ये रहती है, और आप दोनों से मैं समझना चाहूंगा कि सेल्फ लव भी जरूरी है, मुझे इससे कोई मतभेद नहीं है, लेकिन क्या संभव है कि हमारे सोशल मीडिया के डेल्यूज में हम शायद सेल्फ लव को एक्सेसिवली एम्फसाइज कर रहे हैं? जो मैंने निस्वार्थ भावना की बात की ना, निस्वार्थ और परमार्थ की, सेल्फ Yes. कहने का मतलब ये है कि सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है, लेकिन कहीं उसका अतिरेक ना हो जाए। So that is always there, as if, like, as of my understanding of, I am also active on social media, and I have friends of people of my age. If I have to tell you, yes, to an extent they are blurring the lines between self love, being having that self love, niswarth self love, and if they are ready to do or contribute something to the society once they have reached to that level. So they are in that process of self love only, and they don't think of giving back as well. Yes, There yes. lies the problem, and then they blur the line between we are that is something that is more important first, only then we can contribute, but then the contribution part is not coming up. So yes, there is a problem, and I think given the platforms that we have, people can have a better understanding of how to navigate their lives through technology, through social media, and forming a right perspective where they can experience self love and contentment or happiness, so to say. What I about social media, sir, just many times I find it kind of external validation which they are seeking. And Yes. as per my personal experience, I have found people having problems more active on social media. Many times I find that they're seeking something. That when they are happy or contented inside, they use less social media. When they are lonely, they seek something from the social media. So we have to very well conduct studies on that, like who are more active, who are posting more. Professional things are all right if you're doing for professional reasons, but as far as psychological reasons, they are seeking external validation, they are seeking the social support, which is again a mirage. वो मृग तृष्णा वाली बात जो है वो है. Another point, sir, which you highlighted is very important, that if we are happy, we are contented, we can be role models or we can be contributing. The problem is that we are no first part ko chhod ke we are playing the second role, being a contributor. So you very rightly said that if we focus on our own happiness, contentment, and being good role models, I think even our simple compassionate presence can be healing or happiness giving to someone, finally leading to contentment. Can I take up Sheetal's role for a minute and raise a question Sure, sir. Yeah. to you and me? Are all mental health professionals always satisfied and happy? No, not at all, sir. No, Should no, they no. Even they be? क्या जरूरी है कि वो अपने जीवन में संतुष्ट हो? no, Right. no, no, not at all. This on daily basis they ask, like, then I ask, like, don't doctors take medicines? Don't doctors have problems? So, of course they are they are human beings. They are human beings, and especially when they're dealing with, है ना? they should तो not be. समाज ये भी उम्मीद करता है, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर को कोई शारीरिक बीमारी नहीं होगी और मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक को कोई परेशानी नहीं होगी। ये गलत फहमी है ना? राइज कर लूं, मैं सोच रहा था कि शायद हमारे साथियों को मदद हो। रमेश ने हमने आपकी मदद से वी हैव स्पोकन अबाउट अ रेंज ऑफ इश्यूज, हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात किया, स्टार्टिंग फ्रॉम एक एंड पे बायोलॉजिकल डिप्रेशन,
जो बीमारी है, बीमारी को पहचाने, उनकी मदद करें, है ना, उनकी तकलीफ को, उनकी बेबसी को, लाचारी को समझें। दूसरा, बहुत कॉमनली लाइफ में नेगेटिव इमोशंस होंगे, नेगेटिव इमोशन से हो सके तो न्यूट्रल पे आइए, फिर पॉजिटिव पे आइए। अगर अगर हो सके तो सक्सेस और फेलियर को थोड़ा ब्रॉडली समझिए, गहराई में समझिए, एंड गेट द आइडिया ऑफ नॉन सक्सेस एज नॉट द सेम एज फेलियर। फ्रॉम देयर वी केम टू, भाई मानव सहज है कि हम लोग खुशी या खुशहाली या एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, लेकिन हम सब ये कह रहे हैं कि हैप्पीनेस के साथ साथ कंटेंटमेंट भी जरूरी है, और वो हमारी संस्कृति में ऑलरेडी ताना बाना है, उसको हमने सिर्फ पहचान Right. के थोड़ा बेहतर करना है। और बहुत Right. सारे सांस्कृतिक, कल्चरल और पोएट्री और हमारे राइटर्स में एग्जाम्पल्स हैं जो एम्पथी और निस्वार्थ सेवा जैसी भावना को एनकरेज करते हैं। That's how I understand this 1 hour summary. Is that Yes. correct? Or Yes, 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 absolutely. summarized it Absolutely. in a very concise manner, sir. Yes, sir. Yes. Okay. That's really good. Like one example, I was, just Yeah. reminded of like अपनी डिजायर्स को अगर हम अपनी जो ट्रांजिटरी हमारी जो सेंसरी ग्रेटिफिकेशंस को अगर हम डिले करते हैं तो जो रह जाता है वो हमारी सोल का सतचित आनंद अवस्था है, वही कंटेंटमेंट है. सो वी हैव विशिएटेड विद अवर स्टिमुलेंट्स और विद अवर डिजायर्स, विद अवर ट्रांजिटरी या हमारी जो दूरदर्शिता नहीं होने की वजह से अगर हम वो सारी चीजों को डिले करके अंदर झांके अंतर्मुखी होंगे तो मुझे लगता है कि वो जो रह जाएगा वो कंटेंटमेंट होगी. और बहुत सारी रिचनेस, जो रिच लिटरेचर मुझे लगता है वी कैन फाइंड इन अवर ओन स्पिरिचुअल विजडम और लिटरेचर विजडम देन इन वेस्टर्न. मैं रमेश जी आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। उसको उसकी 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 कदर करते हुए, आपने जो बात की उसकी फुल्ली कदर करते हुए, मैं एक अगेन ठोस थोड़ा सा कॉन्क्रीट मुद्दा भी लाना चाहता हूँ। वो ये जी. कि आपने जो बात कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर शीतल आप तीनों सोचें, किसी भी युवा वर्ग में, किसी भी दौर में, किसी की काल में हमेशा ये प्रॉब्लम रही है, नेगेटिव फीलिंग्स, डिप्रेशन, सुसाइडल आइडिएशन, अटेम्प्टेड और कंप्लीटेड सुसाइड, राइट? Yes, तो sir. वो एक जो मसला है, एक मेजर इश्यू है, उसका एक बड़ा सा कारण है, दो अगर मैं कहूँ, एक तो एलिनेशन है ना, Yeah. अकेलापन हो Yes. रहा है। Right, उतना ही right. ज्यादा जो रमेश जी ने हिंट किया, what we call in professional terms, Shital and others, frustration tolerance. Yeah. Yes. हमने जो शुरू के 15-20 मिनट में बात की ना, कि मेरे चाहने के मुताबिक सफलता नहीं हुई या घटना नहीं हुई, तो उस फ्रस्ट्रेशन को मैं कितनी आसानी से या मुश्किल से टॉलरेट कर पाता। Right. Yes. तो या यूथ में जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उसके 2-3 मेजर कारण ये है। एक तो एलिनेशन और अलोफनेस, सेकंड द नीड फॉर एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस एज वी ऑल सेड, एंड थ्री दिस होल आइडिया ऑफ नॉट बीइंग एबल टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन। और वहां मेरा एक मुद्दा यह है कि मानव समाज स्लोली बट डेफिनेटिवली उस तरफ जा रहा है। पहले ये था कि भाई मेरे चाहने के मुताबिक नहीं हुआ तो हम उसको स्वीकार कर लेते थे, अब वो टॉलरेट नहीं कर पाते। Yes, sir. I want it and I want it now. Right. Yes. That is the difficulty. यूथ को अगर हम ये मैसेज पहुंचा सके कि भाई हर एक चीज अपने चाहने के मुताबिक, अपने चाहने के समय पे नहीं मिलती। That's true, sir. I think patience is one of the key here that we also need to imbibe. And one more thing, sir, I'll just add on to the 3 points that you have made. The fourth thing I would say is regarding trust. Like people have lost trust on each other, and I, over the period of time contemplating on the topic, I feel that when your thought, your speech and your actions are not in sync. Let's just take an example. If I happen to talk to a friend, what is happening, what the friend is thinking, or what he's speaking, or maybe the actions that she does, they are not in sync. That will automatically lead to distrust.
And that is Yeah. also one of the reasons that is affecting. First, the trust issues are created, then that will hamper the relationships, and maybe the depression or the stress that a person feels, somehow that thing is related. So as a yoga practitioner also, I feel when there is a sync between what we think, what we say, we mean what we say, and we, reciprocate it through our actions, or show them through our actions, that creates a very healthy environment to be in. Shital, I find the same, in our spiritual, we call mansa, vacha, karmana. Yes, So sir. the list of the causes of mental health problems, which Dr. Desai has very rightly said, that lack of stress tolerance or enjoyment or something. One very smaller point I want to add is lack of exposure to spiritual wisdom, which I'll say ultimately we are Yeah. spiritual beings. So if they are exposed, I have a hope, if they're exposed to the kind of spiritual or literature wisdom which we have in our ancient civilization, I think they would have a larger perspective and a larger world view, which will save them from All such the mental health issues. Yeah. issues that we are facing, or in maybe in future we might have, multiple problems for the generation that is going to come up.